the violence have impacted the Thados a lot. But we are not in the position to explain ourselves that we are not Kuki and we have been caught in the middle. The Kukis have targeted us and the uh, Meitei's side have also affected us. So we need a platform where we have to stand up ourselves and assert our distinct identity that Thado is not Kuki. I am thankful to all the members of the Meitei Alliance amongst all the Meitei civil societies group, basically more of the outside Manipur Meiteis, a diaspora group for facilitating this dialogue and coming up with a very big understanding between the Meitei Alliance and the Thado Impi Manipur. Today, Manipur has been facing a lot of communal crisis and instability in the region in the last few decades. And in all these conflict, the so-called Kuki has been always there. And at one point of time, many of the Thado individuals also feels themselves that they are a part of the Kuki, so-called Kuki group or Kuki ideology. Out of ignorance or our lack of awareness, they have been a part of the conflict. So in the 1992 Manipur communal conflict between the Naga group and the so-called Kuki group, the non-Naga tribes like the Paite, the Mar were not a part of the Kuki-Naga conflict. They were not impacted by the Kuki-Naga conflict in 1992. Basically, they are inhabiting in the southern district called Churachandpur district. And again, in 1997, during the Kuki-Zomi conflict, Kuki was there again, and who are these Kukis who has been residing there? And today we are facing again Kuki-Meitei conflict. Who exactly is this Kuki people? This needs to be identified, and without identification or defining of these Kuki people, we are not in the position to understand, because the conflict started with mob and it has been shifted to communal conflict, and then it escalated to armed conflict. Everybody has been armed, so now the government of India have exercised their supreme power. The president's rule is imposed. The president herself promulgated Article 356. Now, anti-peace people, violence-mongering people are supreme, or the president of India is supreme. Who is more supreme? That has to be decided, and that in the due course, that gradually would be in the position to understand. In the midst of all these things, the Thado people feels like we have to go and explain and make the Meitei people understand that we are mistakenly identified as Kuki. If you go back to the press release and call for the peace, the Thado has been the pioneer. And I'm proud that we are fearless and we are bold enough to call for the peace in Manipur despite all hindrances, in collaboration with Meitei Alliance officially. This will pave a very long way for the future of Manipur peaceful coexistence. And with this event, people all around the world would be in the position to understand what sort of instability the region, the state of Manipur in the northeast and part of India has been facing in every decades or in every year after year. Such type of communal conflict has been witnessing. And with this clear understanding of the conflict, we believe that there will be a kind of solution that will bring permanent peace in, especially with reference to communal conflict in Manipur. So I'm hopeful that with this gathering and with this big historic event between the Meitei Alliance and
the Thado non-Kuki groups of Manipur, the Thado people who are not into the Kuki ideology. In fact, despite being the largest scheduled tribe in the state of Manipur, the cultural and social identity of Thado has been subjugated and suppressed by the political aspirations in terms of the so-called Kuki nationalism that has already suppressed the Thado identity. Thado was at the verge of extinction due to its suppression from the Kuki supremacist group, who themselves wants to elevate and say that Kuki is supreme, Kuki is the only way out, may they have killed us as Kuki, may they kill us in the name of Kuki. The Meitei did not differentiate the non-Naga tribe as Kuki or non-Kuki. They blanketly or they label all the non-Naga tribes, distinct tribes like the Mar, the Zomi, the Thado, everybody as Kuki, so you cannot disown Kuki. In the name of Kuki, you have been killed. So in that sense, many of the youths has been misguided and they are into emotional outbursts and resorting into attacking and targeting and retaliatory mode through various Kuki organizations. That makes the situation complex. Despite being non-Kuki tribal group, the Zomi and the Mar people are also a part of the so-called Kuki ideology of separation from जहाज में बड़ी बड़ी चीजें जाते हैं ना पापा? बड़े बड़े सपने भी जाते हैं। ये क्या लोकल चीजें देख रहे हो? तुम्हारे लिए मैं अच्छे वाला लेके देती हूँ, इंपोर्टेड वाला। चलो आजा। So, this is the shop I was telling you about. नमस्ते। I love those. हाँ मैं पैक कर देता। पूरा सुन तो लो भाई। I need 10,000. 10,000 पीस अमेरिका भिजवाने हो जाएगा ना? हो जाएगा। हमसे देश विदेश में व्यापार नहीं बढ़ाते हैं। आपके बड़े बड़े सपने जा रहे हैं। सपनों को किनारे तक पहुंचाते हैं। अदानी, हम करके दिखाते हैं। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। जहाज में बड़ी बड़ी चीजें जाते हैं ना पापा? बड़े बड़े सपने भी जाते हैं। ये क्या लोकल चीजें देख रहे हो? तुम्हारे लिए मैं अच्छे वाला लेके देती हूँ, इंपोर्टेड वाला। चलो आजा। So, this is the shop I was telling you about. नमस्ते। I love those. हाँ मैं पैक कर देता। पूरा सुन तो लो भाई। I need 10,000. 10,000 पीस अमेरिका भिजवाने हो जाएगा ना? हो जाएगा। हमसे देश विदेश में व्यापार नहीं बढ़ाते हैं। आपके बड़े बड़े सपने जा रहे हैं। सपनों को किनारे तक पहुंचाते हैं। अदानी, हम करके दिखाते हैं। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव, शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। 45 दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता, भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार $350 बिलियन इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात